Have you ever noticed that the children who are in class 1, they're not actually able to read and they're facing problems in reading and the writing skills? So who is responsible for this? And have you given the thought that why the kids are not able to read? It's not because of the curriculum of the class 1. It's because the foundation is actually weak. The way we have taught children in kindergarten is actually not apt, and the curriculum and the syllabus that has to be there in kindergarten is not yet implemented. So that is why in my part 1 of this video, I mentioned about these two books, Twinkling Phonics for Tots, that is for 3 to 4 years of age, and that is for the nursery children, wherein I have covered the sounds of the 26 letters plus their activities related to the phonics, phonemic awareness and phonological awareness, together with the tracking and the tracing details. Similarly, after this, I had made a video on the next level, which is for 4 to 5 years of age, wherein I had included the segmenting and the blending of the sounds, of the corresponding sounds, and that is how the child is able to read and write the words related to these sounds and the sentences related to these sounds, together with the comprehension. Now today I'm going to cover the next level, which is the level 3 of phonics, which is made by me, and it is for 5 to 6 years of age, that is the children who are going in senior KG. So जब मेरा बच्चा सीनियर केजी में जाता है तो उसको थोड़ा सा हमें हायर बढ़ाना पड़ेगा, हमें उसको वर्ड्स और सेंटेंसेस और कॉम्प्रिहेंशन कुछ ऐसे देने पड़ेंगे जिससे मेरा बच्चा थोड़े से कॉम्प्लेक्स कोडिंग को भी समझ सके या फिर उसको रीड कर सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जो क्लास 1 में जाने वाला है और वो अच्छे से आपके टेक्स्ट को रीड कर सके, बुक्स को रीड कर सके, उसके आंसर्स को समझ सके, कॉम्प्रिहेंशन को समझ सके, तो towards the kindergarten section, that is nursery, KG and senior KG, you have to put in such a curriculum which is really going to affect their reading and the writing skills. So that is why I have today for you the level 3 part 1 of Twinkling Phonics for Tykes. Tykes means those children who are slightly above than Tods and Tads, and they are of 5 to 6 years of age. That's why I've kept the name Tykes. So let us quickly see what is there inside my book. But before that, you need to subscribe my channel, and if you really like this book and video, then please order. It is available on Amazon also. I'll be providing the link in my description box, so you may order it from me also, you may order it from Amazon also. So let me introduce myself. This is Shweta Gupta. I am the Jolly Phonics accredited trainer, and after careful inspection of what the children need and after the experience of 18 years, I have put in all these books. So let us quickly see the part 1 of Tykes. Now in this part 1, everything is mentioned, the acknowledgement and about the author. If you want to know more about me, so everything is mentioned in this. Now what will be the content? Please carefully watch the content. So first, in the Tads course, what we had done was, we had done only and only the group 1, 2 and 3 sounds together with their words, sentences, activities, fill in the blanks and comprehension thing. So the book 1 and 2 of Tads, they cover the group 1, 2, 3 words and the sounds of 4, 5, 6, 7. Similarly, in the Tykes thing, we are going to cover the main blending and the segmenting skills of rest of the other groups, that is 4, 5, 6 and 7 one by one. So first we are going to start with the revision of the group 1 words, so that जिन बच्चों ने कभी किया नहीं है इससे पहले तो वो भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर सके. So यहाँ पे ग्रुप 1 का रिवीजन है वर्ड्स का, यहाँ पे सेंटेंसेस है. सिमिलरली ग्रुप 2 है और इससे रिलेटेड Group 2 से related words and then sentences are there. So this revision has to be there while approaching towards the level 3. So इसी तरह से level 3 है, level 3 की sentences है. अब यहाँ से मेरा level 4, that is A sound, is going to begin. So A sound, slightly phonemic awareness skill you have to give. You have to revise the tricky words that we have done earlier. And then if you can see, all these activities are there, wherein the coloring is there, the writing is there, activity is there, and the revision of the previous words is there. So every page, every sound, I'm going to give the revision which must be there with each and every sound. Please remember this if you are a parent, if you are a teacher, whenever you are introducing a new sound together with its words, so the revision of the previous words is extremely important. So similarly, if you go forward, since I have taken a grain which has to kept into the sack, right? So here the child has to read it, and with the pencil the child has to put it into the sack.
Again, the child has to read it and put it in the sack. So this can be done with the help of the colors also. It can be read aloud also. It can be circled also. Whatever, you can do the customization with this worksheet. So this way the child is reading many of the A words. So whatever worksheets I've covered, every worksheet is covering the phonemic awareness skills and the phonics skills, blending skills, segmenting skills. So here also the child has to match, but first the child will be reading it. So the visual difference is also there. So here the same thing is there, but the child here read the word and then matched it. But here the child has to see the picture and write the word without turning the पेज. तो यहाँ पे भी मेरा बच्चा स्पेलिंग्स को सीख रहा है, लिखना सीख रहा है. अब मैं पिक्चर भी नहीं दूंगी, अब मैं सिर्फ यहाँ पे रेन वर्ड्स दूंगी. रेन वर्ड्स का मतलब क्या है? वो वर्ड्स जो मेरे बच्चे ने अभी ग्रीन में पढ़े हैं. सो ये वाले वर्ड्स का आप जब 2-3 बार रिवीजन करा लेंगे, सो यू हैव टू डिटेक्ट दीज वर्ड्स ओनली हियर. और यहाँ पे मेरा बच्चा इन रेन वर्ड्स को लिखेगा. सो यू मे कॉल इट एज रेन वर्ड्स, एंड इफ द चाइल्ड हैज डन ऑल ऑफ देम करेक्ट, सो यू कैन कलर दीज 3 stars or 2 stars or 1 star depending upon the reward that you want to give to the child. Similarly, if we approach further, I've taken few tricky words here because यहाँ से अब मुझे मेरे बच्चे को थोड़े complicated tricky words भी देने हैं, बड़े tricky words भी देने हैं, so that my child is able to read more sentences. So here, depending upon the A sound that you have done, I've included the sentences, then the fill in the blanks, and if you see the comprehension here, so the comprehension that I've taken contains most of the A sound words, the maid and the snail. The maid had put the snail in the pail. So put is a tricky word. So that is why we have already introduced and we have started introducing the tricky words to the children. तो यहाँ पर मेरा बच्चा ये करेगा, इन questions को पढ़ेगा, उनका meaning समझेगा, comprehension करेगा, इससे related एक visual memory बनाएगा अपनी खुद की, और उसी के according फिर वो comprehension करेगा. क्योंकि जब बच्चा मेरा class 1 में जाएगा तो यही तो होता है कि text होता है, questions होते हैं, बच्चे को सोचना होता है, समझना होता है, और वो बच्चा क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाता है? क्योंकि हमने इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं दी होती हैं बच्चों को. सो प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू गिव द कॉम्प्रिहेंशन एंड द फिल इन द ब्लैंक स्किल्स, बट ओनली द डिकोडेबल वर्ड्स एंड फ्यू ट्रिकी वर्ड्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन. फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे होने चाहिए जो शॉर्ट हो और रिलेटेड टू द वर्ड्स दैट यू हैव डन, उसी से ही रिलेटेड होने चाहिए. Similarly, I have again taken the picture of the tricky words. The child has to trace it and then write it. Now I have taken the fill in the blanks related to the tricky words, but I have taken it in oral format. If your child is able to read it, because I have taken many words which the child has not done till now. So what you may do here is, you may take this exercise orally. Similarly, one more comprehension. So every sound that I've taken in this book is having many exercises related to the sound. So it could be the phonemic awareness, it is phonological awareness, it is tracking also, tracing also, the revision of the previous one, coloring also, tick marks also, the words matching, then writing the pictures, then the rain words, that is your segmentation, and then trace and write the tricky words, sentences, fill in the blanks, comprehension, then one more tricky page and the related exercise, and then one more comprehension. तो आपको क्या लगता है, अगर आप A sound से related अपने बच्चे को इतना कराते हैं, ना कि सिर्फ 4 words और 4 sentences, उतने से कभी भी बच्चे का रीडिंग राइटिंग स्किल नहीं आता है. सो अगर आप इतना कराते हैं तो आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट बॉक्स. क्या ये सफिशिएंट नहीं है? क्या मेरा बच्चा जो इतना पढ़ रहा है, क्या उसकी रीडिंग और राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी? माई चाइल्ड रिक्वायर्स अ carefully driven and a carefully designed set of the worksheets where the child is actually able to read and write. So मेरा गोल एक्चुअली है क्या? मेरा गोल ये है कि मेरा बच्चा जब क्लास 1 में पहुंचे तो उसे एटलीस्ट 60 to 70% रीडिंग आती हो, उसे कॉम्प्रिहेंशन आता हो, उसे समझ में आता हो, उसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका मीनिंग आता हो. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. सो द फर्स्ट sound you have seen. Similarly, I've taken rest of the other sounds. Worksheet is there, and then I've taken the words, then the names of the pictures, the matching is there, and then the B words. So do you remember I've taken the rain words there because the A sound was there. Here I've taken the B words because E sound is there. And again we have the fill in the blanks,
sentences, then the comprehension, then again tricky wording. So जब आप बच्चे के साथ इस तरह से धीरे धीरे चलते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिविटीज और कॉम्प्रिहेंशन कराते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कोई कॉम्प्रिहेंशन बना सकते हैं. आप 4-5 वर्ड्स ले लीजिए ई साउंड के और उसके अराउंड 5-6 सेंटेंसेस लिख के उसको एक स्टोरी फॉर्मेट दे दीजिए. सो दैट इज हाउ द कॉम्प्रिहेंशन विल गेट रेडी एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर. तो अगर आप इस बुक में देखेंगे तो केयरफुली आई हैव टेकन सो मेनी साउंड्स with their corresponding sentences, words, beautiful illustration, pictures, pictorially बच्चा बहुत कनेक्ट होता है. जितने ज़्यादा decodable words मैं ले सकती हूँ वो मैंने इस बुक में लिए हैं. I've taken many of the tricky words which are actually going to enhance. And the beauty of this book is that by the end of this book, I have taken the sentence writing also, and only those words which the child has seen previously. So if the child is seen trained, the child has to write one sentence. तो इस तरह से एक sentence building होना, visual memory develop होना, comprehension details develop होना, spoken English develop होना, ये सारा बच्चों में आता है. So I have taken only 3 worksheets. You may enhance it further. So I have taken the correct word exercise here, the matching of the sound with that of the correct picture is here. And the beauty is I've taken the correct vowel sound here. So I've taken many of the pictures, mixture of the pictures as in whatever sounds we have done till now. इस बुक में जितने भी साउंड्स हमने किए वो सारे साउंड्स के हमने यहाँ पे मिसलेनियस लिए हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं वावल साउंड्स में. सो यहाँ पे कोट, सो द चाइल्ड हैज टू राइट ओ साउंड हियर. इट इज इग्लू, तो इ साउंड. सो वी हैव टिल नाउ टॉट a, e, o, A, E, I, O, U, 10 sounds. So these pictures will be containing the vowels related to 10 sounds. Similarly, 10 vowel sounds. Similarly, the correct vowel sound, you have to color it or maybe you can take it also A or A. The children also get confused while dealing with the A and the A sound. So ये exercise आपको उस तरह से सिखाएगी. So if this is train, what should be the sound? A, I or A? The single letter A, it should be A, I. यहां से मेरा बच्चा ग्राफेमिक अवेयरनेस भी सीख रहा है. फोनेमिक अवेयरनेस तो है ही है, लेकिन यहाँ पे मेरा बच्चा ग्राफीम से भी रिलेट कर रहा है. सो मैंने ए, ई, आई, ओ, यू 5 लिए हैं क्योंकि 5 शॉर्ट एंड लॉन्ग वावल्स हैं. सो अ है कि यू है, ओ है कि ओ है. This is what the child has to color or maybe the child can correct it also. Similarly, I've started with the meaningful words. Again, the fluency has to be there. The child will be reading it and the child will be understanding. अच्छा, उसने कभी ऑड फॉर्ड पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे मेरा बच्चा मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल के बारे में सीखेगा. सिमिलरली अब इसके बाद जब ये बुक खत्म होती है तो मैंने एक असेसमेंट भी दिया है. यू कैन राइट द टाइम हियर. Start with the 0th second and see how much time the child is taking to read all these words. And similarly, you can do it for 2, 3, 4, 5 number of times and note the timing every time. कि मेरा बच्चा कितनी देर में ये सारे वर्ड्स पढ़ रहा है और जब आप उसको repetitions दे रहे हैं तो क्या वो टाइम रिड्यूस हो रहा है? Yes, it is going to be reduced and you can give the marks also here. So these are related to words, then the assessment of the reading sentences, assessment of the writing sentences. वहां पे मैंने blending के लिए दिया, reading दिया. यहाँ पे मैंने writing दिया यानी segmenting दिया, segmenting assessment. And similarly, the child has to write the sentences here. Give 4-5 sentences, the child has to do it. Similarly, write the missing correct vowel sound. Again, this is the assessment which the child has to see and do. And here the child is going to understand and you as a teacher and a parent will understand कि मेरा बच्चा कहाँ गलत कर रहा है, उसे कौन से साउंड में दिक्कत हो रहा है, वो कौन से 2 साउंड्स हैं जिसको वो कंफ्यूज कर रहा है. So that is how you can circle it and find it out कि where actually you need to emphasize as far as the vowel sound is concerned. Okay, so this was the part 1 of types, and similarly I have the part 2 wherein I have taken the rest of the sounds. So if you can carefully see here, types level 1 words, types level 1 sentences. तो आपने previous book में जितने भी words और sentences किए हैं उसका एक quick revision part 1 का, कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस बच्चे को पहले करने हैं. अब उसके बाद जैसे आपने बाकी साउंड्स देखे थे बिल्कुल वैसे ही हम आगे एक्सटेंड करेंगे फॉर द ग्रुप 5, 6 and 7. Sound, the same worksheet is there. See the beautiful rings here. All the words are written in the rings. So ये मेरे बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करता है, ना कि सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए.
तो इस तरह से ब्यूटीफुल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों को सारे वर्ड्स देने के लिए, ब्लेंडिंग कराने के लिए. देन यू हैव द मैचिंग, देन राइट द नेम, देन राइट द रिंग वर्ड्स लाइक द रेन वर्ड एंड द बी वर्ड, एंड सिमिलरली द fill in the blanks, sentences, comprehension and the tricky words. And this is how we are going to proceed further. अब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको दिखेगा कि ये सारे हम कहाँ तक जा रहे हैं. हम जा रहे हैं group 7 तक. So ER and after sound we have the R sound. That is the last sound of 42 sounds. So here are the same worksheet is there, and can you see how beautiful the jars are looking, the candy jars? So here my child is going to read and get attracted to it because you are giving the visual interaction to the children also. So I have R and I have the starfish for the shark also, and I have the shark words also because sharks are bigger, no? So that is why I've given the bigger words in the shark. So this is how you can create the flashcards also for the children. Instead of having only the word flashcards, you can have these flashcards also for the children. And then the same thing is there. The matching, fill in the blanks, the car words that the child needs to write, the sentences, and then the comprehension. And similarly, the assessment that you had done in the book 1, we have the assessment for the children in the book 2. So अब आप मुझे बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी. और अगर आपका सीनियर केजी का बच्चा, ये दोनों बुक्स जाती हैं सीनियर केजी में, ये दोनों ब्लू बुक्स जाती हैं जूनियर केजी में, ये दोनों रेड बुक्स जाती हैं नर्सरी में जिसमें हमने सिर्फ साउंड्स लिए थे. So we have taken the sounds, which is very easy to take in nursery grade. Similarly, I've taken the group 1, 2, 3 words only in the TADS level, that is at the junior KG level or at the level 2 if you are taking the private classes. And similarly, this is the level 3 wherein I have taken the group 4, 5, 6, 7 and certain extension of what we had done in the level 2. That is fill in the blanks, writing the words, sentences, comprehension, tricky words, more of the tricky words and the assessment also. तो अगर आपका सीनियर केजी का बच्चा इतना पढ़ता है, मुझे आप एक चीज बताइए, अगर आपका सीनियर केजी का बच्चा ये सेंटेंसेस पढ़ लेता है आपकी मेहनत की वजह से, या आप पेरेंट हैं या टीचर हैं या ट्यूटर हैं और ये मेरा बच्चा पढ़ ले रहा है, इतने सेंटेंसेस पढ़ रहा है, हर ग्रुप में हमने सेंटेंसेस और वर्ड्स दिए हैं और टेक्स्ट से खेलना सिखाया है. एक्चुअली रीडिंग इज ऑल अबाउट, राइटिंग इज ऑल अबाउट द मैजिक दैट यू डू विद योर सेंटेंसेस एंड विद योर वर्ड्स. तो अगर आपका बच्चा इतना पढ़ लेता है, सो डोंट यू थिंक दैट यू हैव डन जस्टिस विद योर चाइल्ड? Don't you think that your child is ready for class 1? Yes, your child is well ready for the class 1. But this is again not the end of the English language journey. We have to proceed further. तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि वाकई में ये बुक अच्छी है और ये आपके बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ा सकती है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा सकती है, उसकी रीडिंग और राइटिंग जर्नी को बहुत इनहांस कर सकती है, तो प्लीज ऑर्डर द बुक नाउ. बुक आई हैव प्रिपेयर्ड नॉट फॉर माई ओन प्रॉफिट बट फॉर द प्रॉफिट ऑफ दोज चिल्ड्रन जिनके पास मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ. तो अगर आप रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज में हैं या आप एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे बच्चों को वाकई में बहुत जरूरत है, तो प्लीज उन बच्चों को ये गिफ्ट करिए. मैं भी कर रही हूं, आप भी करिए, ताकि उनको ये एक बेसिक स्किल आप सिखा सके. इंग्लिश लैंग्वेज इज अ स्किल जो आप किसी भी बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, बच्चे का डर निकल जाता है किसी के सामने भी बोलने से, और बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं इन सारी बुक्स के साथ. So I request everyone, kindly write your feedback in the comment box so that I'll also come to know that you have liked the book or not, and please do it right now. So signing off now, this is Shweta Gupta and I'll be waiting for your feedback about the book and how did you like the book. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.